And look now, the moon prana. Moon is the natural center of our planet Earth. Today, people take picture of the phone, wow, look, a hole sold on the moon, Yes, madam. Your phone can take phone hole, take hole sold, All AI inside, madam. they program for you, make it like that, madam. all is not real, madam. So like that. Look how beautiful it is. The moon pushes the water on Mother Earth. Pulls. It pulls. See how it pulls. High tide and low tide. Low tide, not high tide. Not high, it's a little bit less. But go on the other side. So imagine. Look. Look. See what number of how the water went up so high, madam? The same boat. How much water is there? From here to here. Can you imagine how many meters? 3 meters? Where the water come from? And the other side has gone down by 3 meters. What has gone up by 3 meters? All because even when hurricane come, I asked everyone to bless the moon. The moon is part of the cause of the hurricane, madam. Ask them to ask forgiveness of the moon. All of you, please. The name of road necessarily change. See the water, how much the water can come because of this, the same boat. You see how the effect was time, okay? And also remember, now we are also water. How we will be affected from a young age. See, as you grow older and older, the water level comes down. And normally they say about 75% for young people. Young people want more water in the body. So now this water can also be affected by the moon spectacular field. Let's say lunatic and all kind of problems. चंद्रमा पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह यानी सैटेलाइट हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटी पृथ्वी पर पानी को खींचता है, विशेष रूप से उसके सबसे नज़दीकी हिस्से से, जिससे उस क्षेत्र में उच्च ज्वार यानी हाई टाइड्स उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप जिन क्षेत्रों से पानी दूर खींचा जाता है वहाँ कम ज्वार यानी लो टाइड्स का अनुभव होता है। तूफानों के आने का एक कारण चंद्रमा का धरती पर प्रभाव भी है। इसीलिए तूफान के समय पर या जब तूफान आने वाला हो तब हमें चांद को भी आशीर्वाद देना चाहिए और उससे क्षमा मांगनी चाहिए। चंद्रमा हमारे शरीर में मौजूद पानी को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। युवाओं के शरीर में पानी की मात्रा आश्रय 75% होती है। यह पानी भी चंद्रमा के ऊर्जा क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है, जिससे मानसिक बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती है। Look at, you see when I went, see gravity pool, traditional farming is in the moon. When I went to Argentina, the calendars all had moon phase. I asked, why has all moon phase? I was surprised. He said the farmers use this to plant trees during the moon phase and half moon and full moon, things like that. In those countries. See how full moon, because it start the flow, so the plant. Now look here. Look how the moon will grow. How the energy will flow down and flow up and go down again. How the energy flows through the moon phase. The new moon, crescent moon, full moon, and waning moon. Even when you get married, they say don't marry when the moon is going down. Moon when going up, when the moon is going up. Let's go and check how much divorce happened during that time and after the But you are statistic whether it helps or not. But you are statistic. One time got married, go back and say, what's the moon? Waning moon or descending moon? And but someone must study on the thing, on the date of the marriage and when the divorce or what happened, Well, I remember they say this will happen. We must go and check it here, Like that, So like that. So now different moon phase, reciting prayers, chanting mantras, meditating, submission, ancestor prayers, puja, and tantric witches and Hindus follow lunar calendar. And tantric use a lot of this energy, madam, during the time. They do a lot of things. So I have told all people during dark month, I say, okay, all of you please sit down. We're going to remove the dark energy today. All the tantrics. We don't have to use the energy to do some kind of negative energy, right? Okay, good. Next. Insane, lunatic condition, insane, mentally ill, demented, unsound mind, sick in the head, epilepsy, disturbed mind, maniac, hysteria, delirium. All this we can heal with prana while heal.
Follow the thing. Sit on the blessing on the full moon day and dark moon day, and that's time you do the healing. अर्जेंटीना जैसे कुछ देशों में पारंपरिक खेती के तरीकों को चांद की स्थिति के आधार पर किया जाता है, जैसे पेड़ लगाना इत्यादि। इसी तरह चांद की स्थिति पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। ऊर्जा पौधों से चांद तक ऊपर की ओर प्रवाहित होगी और नीचे की ओर आकर फिर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। एक कहावत है कि जब चंद्रमा ढलने की स्थिति में हो, यानी कृष्ण पक्ष, तो शादी नहीं करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के दौरान विवाह आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। सर मजाक में कहते हैं कि हमें जांच करवानी चाहिए कि शुक्ल पक्ष के दौरान हुई शादियों में कितने तलाक हुए हैं। हिंदू तथा तांत्रिक अपने पूजा पाठ और ऐसी अन्य क्रिया जैसे प्रार्थना, मंत्र जाप, ध्यान, दीक्षा, पूर्वजों की प्रार्थना, पूजा और होम करने के लिए चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, उसका पालन करते हैं। तांत्रिक अपने अनुष्ठानों के लिए इस ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। पीवीएच में कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए आशीर्वाद के दौरान उन तांत्रिक को भी याद करते हैं, ताकि उन तांत्रिकों की नकारात्मक ऊर्जा को बेअसर कर सकें। मानसिक बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया, व्यक्तित्व की बीमारी यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, मैनिएक, हिस्टीरिया आदि, जिन्हें पीवीएच प्रोटोकॉल का उपयोग करके हील किया जा सकता है। यदि रोगी नियमित रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आशीर्वाद के लिए बैठे तो इन सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। Now, as of late, all this happened during the new moon and full moon session of the time. It's very, very common. Very, very common. Okay, guys? Right. So now, types of mental disorder, moon disorder, anxiety disorder, personality mood, personal disorder, psychotic disorder, substance abuse disorder, all this can happen during the moon phase. Because the energy, the dark energy. Full moon, not a problem. The dark moon is a big problem. Okay, guys? Very good. Like that. So now, sometimes chained and locked. They put the room and locked up. I met a woman, she was 72 years old. For the very long time, she was having the same problem. Another man, 54 years old. I met him in Dallas. He's an Indian man. Same problem. From the night he knew he had psychotic effect. Met me clean, now more than 6 months, no more problem. Just remove the connection that he was getting from the dark moon and new moon. So remember this, as a healers, we will come across people like this. Nobody can heal this. Not acupuncture, nothing. Okay? PVC have done so many of this healing. You understand about dark energy, soul attachment, dark inner world connection. We remove them and they become fine. Okay, guys? Okay, now, reason for lunatic, nothing. Soul attachment, past life connection, white magic, black magic, curse, connection to the tattoos, connection from ornaments like dream, chasers and masks, connection from spiritual ornaments and mantras. You know, tattoos, especially when you go to Thailand, they put tattoos. They put some kind of, monks will do some inner world connection. And that connection will come during this time, so must be very, very careful. You may not be able to manage it. A lot of people from Malaysia, Singapore, go to Thailand, they put tattoos and come back. So it's getting very... Yes, madam. Everybody wants something dark with them. They want the power. They want the power. Everybody wants power. I want fast, quick power. What can I get? Just do it because they think it's art. You know, in Singapore, it's Very common. Not only Singapore, madam. Everywhere in the world. Everywhere in the world, madam. Everybody feels I must have one tattoo on my body. भावनात्मक बीमारी यानी मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर मतलब नशीली दवाओं का दुरुपयोग, साइकोटिक डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारी, यह सभी अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा के उपस्थिति के कारण हो सकते हैं। ऐसे समस्या से पीड़ित लोगों को
जंजीरों में जकड़ दिया जाता है या घर में कैद कर दिया जाता है। एक 72 वर्षीय महिला और 54 वर्षीय पुरुष को ऐसी ही समस्याएं थीं। सर ने अमावस्या के दिन आने वाले कनेक्शन को हटा दिया। पिछले 6 महीनों से उन दोनों को कोई समस्या नहीं है। कोई भी अन्य उपचार पद्धति ऐसे रोगियों को हील करने में सक्षम नहीं है। पीवीएच ऐसे कई लोगों को हील करने में सफल रहा है। पीवीएच नकारात्मक ऊर्जा, आंतरिक दुनिया के कनेक्शन और आत्मा का जुड़ाव मतलब सोल अटैचमेंट्स को समझता है और उन्हें हटा भी देता है। पीवीएच मानता है कि इन मानसिक बीमारियों का कारण है सोल अटैचमेंट्स, सफ़ेद जादू, काला जादू, अभिशाप, पूर्व जन्म के संपर्क, टैटूज और आभूषणों का अत्यधिक आभूषणों से संबंध होना जैसे मास्क, यंत्र होता है। यदि आप थाईलैंड में टैटू बनवाते हैं तो संभावना है कि इसका आंतरिक दुनिया से संबंध होगा और यह हमें बाद में बहुत परेशान कर सकता है। आजकल लगभग हर कोई अपने शरीर पर कम से कम एक टैटू बनवाना चाहता है और इसे एक कला के रूप में सराहा जाता है, लेकिन यह बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक दुनिया के संबंधों को आकर्षित करता है। Collection of ornaments like dream and mask and collection of spiritual ornaments and things like that. You see, they don't understand what they're getting into, madam. See, they say it's skin art. Can you remove the art, put a new art after that? Cannot not. For life you're stuck, you know. Tomorrow something happens, you can't even scratch, madam. Stop playing the fool, madam. Now, how to stop? Affirmation, past life connection, neutralizing, soul elevation, no dark energy removal, stop tantric occult practices, stop visiting places like practicing occult energy, stop going to such places. During moon and full moon, they all go, madam. Blessing and appreciating the moon. The moon is a cosmic body divine. Our moon is a purity God desire. Bless the moon. So, madam, follow, madam. See, madam, all I'm asking everybody, just spend a few minutes, madam. It's not too much to spend. Yes or no, madam? Bless the nature around us. Bless all that we receive from everybody. Bless the water, bless the sky, bless the sun, bless everybody. And things will start to change for each and every one of us. इन समस्याओं से समाधान के लिए हमें नियमित रूप से पीवीएच अभिकथन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये पूर्व जन्म के संपर्क बेअसर कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में भाग लेना चाहिए। नियमित रूप से सोल एलिवेशन गाना चलाना चाहिए। गुप्त तांत्रिक प्रथाओं को करना बंद कर देना चाहिए और उन स्थानों पर जाना बंद कर देना चाहिए जहां गुप्त विद्याओं का अभ्यास किया जाता है, विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में। चंद्रमा को आशीर्वाद देना चाहिए। हमारा चंद्रमा दिव्य अग्नि का उपग्रह है। हमारा चंद्रमा वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। हमें अपने आसपास की प्रकृति को आशीर्वाद देने की आदत बना लेनी चाहिए, चाहे वह सूर्य हो या पानी या आकाश। हम उनसे बहुत सी चीज़ें प्राप्त करते हैं। जब हम नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बदलना शुरू हो जाएंगी। Okay, then the cosmic prana, higher flow, higher from a higher source, much higher source, beyond our sun, beyond our moon, coming from very high source, and flowing towards our body, to us. Okay, and how they flow, madam? They flow into the sky. Flow up here. This one you don't know where it is, huh? You don't think you can see it. You cannot see this now. Coming from very high source, flowing to each and every body and going into our body. Completely inside us, okay? This is cosmic prana for prana. Activate by flow of cosmic into oneself. Like that. And you flow. When energy will flow? When energy will flow? When you're ready, madam, when you're chosen by God. See, you're following PVH. Automatically you're chosen automatically and energy will flow to each and every one of you. Like that, when you walk, you become like that.
people see you. Who sees you, madam? All the souls around sees you. You cannot see this yourself. You cannot see this yourself. You cannot see this yourself. Somebody will see you. That's why as you go more and more PVA, some souls, you say, they have so much soul attachment. They are coming to see you. Don't be afraid. Asking for help. Yes, madam. Because they've never seen this somewhere anywhere. Hey, how come you feel so bright now? Hey, please help me now. How do you become like this, huh? I said, I follow PVA, you follow PVA now. Oh, madam. Everybody following this and following that, doing mantra the whole day. Nothing would happen, madam. Nothing would happen. Okay, like that, huh? Then like this, see how? Now, see, the prana will flow. Flow through you. When you flow? When you flow, madam? By doing the blessings. Okay, you want to see the energy flow now? Who wants to see the energy flow? You must learn to practice, as PVH now you got to diploma means, you must go back home and try and see, You must all learn to do this. All timer. Okay, see, Madam, come, hold the camera. There's a cameraman. See guys, See, you must learn to do this. You all must learn to do this. Okay? You see, we got many chakras. Crown, ajna, hands on chakras. These chakras will rotate according to the strength of the chakra. They will rotate, but not strong enough to push this. Understand? You come. Stand there. Okay, like that, You have to put it up. Yes, put it on top. What's happening? It's moving sideways. Yes. I'm not doing anything, Folding. So automatically the chakra is doing this. Okay? Put both your hands. Can you see from the camera? Put them nearer. Yeah, thanks. So there are also chakras here also. I'm putting here. See? Now this one is this way. Understand? Okay, put on this hand. Both. Okay? So for her, something is moving. For them, you should all be able to do this. If you fail, no diploma. Tomorrow morning, show me. Coming for show me. If you want diploma, can another $50 extra. No, this is an art. It's the bioenergy of your bioenergy coming to this person. Every chakra is starting to rotate. Clockwise or anti-clockwise. What, madam? Which one? The one, the money part or no money part? I see. The chakras will turn clockwise. But it's moving, but not enough to turn in a clockwise. It's doing this. This or doing like this. That means this way. That means this way. Rotate means clockwise. Stationary means not turning. So that means if not any of them, if it's not turning clockwise and Lily, come. Lily, show I can do for her. can sit down and do also, right, sir? Can sit down, no problem. So why does it need to be white in color? No, I want you all to see, madam, that's all. This is any color. If I look at the camera, I cannot see, madam. Black color cannot see. No, white color, so make more visible. See now, see. You see. So now, the chakra is turning clockwise. This is how it should be. The clockwise direction, and must be able to push my, what do you call this, my earphones in a clockwise direction. Understand, madam? You all should learn to do this. Understand? You come in front of the lady, show me both the palm chakras, come this way and this way. So now, putting here, I see. Smaller circle. Why smaller circle? Mini chakra. No, minor chakra. So minor chakra. Okay? So I'm coming here. See? Same size. I'm going the finger now. See here? Even smaller. Why?
mini chakra. Size of the chakra. This is the major chakra. Crown, this is the crown chakra. See now. I can understand like this. I'm a good life. Yes, madam, why? She's doing all the PBA, she's following, she's organizing, she buy tea for me and come on. What does she buy tea? What's the name of the place? And then buy tea for me, sir, tea for you, sir, tea for you, sir. Hey, that's not what buy tea from your aunt. How? But don't buy tea for me, I'll go return, huh? Oh, 50%. Now I'm going to drink. 50 only all No, it's not that. You're serving, you're doing, you're helping, you're coming, you're bringing people. Because they're not paid to do this now. It's a volunteer. That's all. This volunteering, madam. You understand? When you volunteer means you do this job. That's all. Understand? Okay? All take a healing wands, please. Put it in front. Bring a chair for this girl. Start. Let's see. I'm going to do it nice. See what's happening. Okay. Nothing can change now. Okay, put a hand for this side. All of you put the wands in your mouth. Wands on your eyes, the chakra. Wands, eyes, the chakra. Put it there. There you go. Say. Supreme God, Divine Father, Divine Mother, make each of this blessing. Use me today. Bless all women in Singapore. Go by the side. Healing wand, healing condition, all the period pain, all the women in Singapore. Rotate. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3. So now, all of you guys are now doing blessing all women who have period pain in Singapore. Other one doesn't matter. See the change in the direction of the wand now? Yes. Whatever. I'm not doing this. Chakra moving. Chakra's turn now. Now the divine energy is flowing through her, coming through the wands, and blessing all the women With period pain. of period pain and over bleeding in Singapore. See how you can change. All you do is just spend just 5 minutes, madam, a day in the morning. If you all can do it together as a Singapore thing, okay, 7:30 in the morning or whichever you all decide in the group, today we will do all the healing of all the women in Singapore, and this energy will go to all the women, and you'll be surprised somebody will not have a period pain. You do it in the night, one time in the night, you'll do one in the evening. One in the morning, one evening, just 3 minutes only lah. You see what happened to a chakra? See. This is where the divine energy flows. This is where the cosmic energy flowing through you. You're not doing for your uncle, you're not doing for your auntie, not doing for your children, you're doing for all the women in Singapore, irrespective of who they are. Could be a neighbor, could be a sister there also, could be an ex-girlfriend, could be an ex-wife also, feeling pain, you're healing her now. Yes, it doesn't matter. Everybody is saying now. See how it changed, how the chakras just changed like that, from this shape to this shape. This is how the cosmic energy flows. And putting on the one in the Ajna chakra. Say, thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for making me an instrument of this blessing. Please guide me to help more women, not only in Singapore, but all over the world. Thank you, thank you, thank you. I am being of divine fire. I am the purity God is I. My soul of divine fire. My soul is the purity God is I. All women in Singapore, all women of divine fire. All women in Singapore, all the purity God is I. Thank you, thank you, thank you. That's all, guys. Finished. Now we can change, madam. Energy flows through you that time. Listen, madam. Just pen. You will be amazed to know how people get blessed. Show me your hands now.
Hmm? So this is what I'm asking everybody to do whenever you can. You see? Even a small thing there. See, everything is now good. How long it took you? 3 minutes, 4 minutes, minute? For divine, the cosmic energy to flow through you? Hmm? Look at the cosmic energy flowing through you. That's all. Flow through you. Okay? Thanks. Give a clap to yourself. For yourself. Not yourself today. All the women distracted. Understand? Very simple tap there. There's no big deal, madam. There's no such thing. You must climb the mountain and go up the mountain, sit here, sit there, and don't eat for 5 days, and fasting for 10 days, and then sit on, and sit on What are you going to do, madam? That's my question only. That's my question, madam. I'm going to push that part, madam. I'm good at madam. I still learn from them, madam. Good point. Sorry, that's how I do that, madam. I went to this Tibet monastery where they kicked out from Tibet. They come India has monasteries, you know. That's what we do, madam. 300-400 children are doing every day. Wow. Feel like, hey, can you change the mantra to divine faculty back? Something will change. The divine energy will come and say, China, please allow them to come back. They got no home now, madam. And India become a big home. India has given acres of land. Dharamsala. Yes. What a 3 Dharmasala, and I've been to 2 of them. I've been one with the Dalai Lama. I've been one with another Dalai Lama in Karnataka. I've been. Huge place. You enter the city, you think you're going to Tibet. Whole place is different. We don't speak Hindi, they speak their own dialect and all. Good time. We get lots of money because all the Tibet people left the country and they get lots of funding from all over the world. Understand? They're doing very well. And they got young children, madam. They just go down there and say this mantra. Dum, 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 dum. What are you doing here? Seriously, madam. Oh, wash, but I did life in all of these places. You all never watch my life, lah. I take all the trouble to life, I don't watch it. Come on, see, I make comments about what are they doing. The sound is so eerie, madam. Yeah. Oh, no smoke flow, no, very eerie sound, like very dark kind of energy, you know. My friend is here. He's having taken to Bhutan. She haven't taken to Bhutan yet. Girlfriend came back already now. Girlfriend never come back. No, he got a girlfriend in Bhutan. To go to Bhutan, you got to pay $400 a visa. Very expensive to have visa, no, but very expensive. And they are the only Buddhist country in the whole world with no other religion. Buddhist country, you know, so must go down there and meet the people. Sometimes they do know the Buddhism is not the kind of Buddha Buddhism, no. They are all changed in their own way. Okay? So anyway, so this is another one that we had. The blessed Mother Earth. Now we went done. We are all fine. Now just think, we can do this blessing to receive as your Mother Earth, how the divine energy will flow to the crown chakra and come into you. Okay guys? Okay. So cosmic divine energy will flow, and we all bless selflessly. You see, everybody go to temple, pray for themselves, pray for the family. After PVH, you are praying to Singapore now, I think one group pray for Taiwan also, isn't it? Never mind. So we must bless selflessly, bless the country, bless everybody, bless Singapore. Singapore is fine. Bless country that need help, no food. Start blessing, my friends. Okay, then things will start changing. Okay. ब्रह्मांडीय प्राण का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा से परे एक उच्च स्तोत्र से प्राण का प्रवाह। ब्रह्मांडीय प्राण सहस्त्रा चक्र से शरीर में प्रवेश करता है। यह ऊर्जा तब प्रवाहित होगी जब व्यक्ति को ईश्वर द्वारा चुना जाता है। जब कोई पीवीएच का सही अनुसरण करता है तो यह ऊर्जा उसके माध्यम से प्रवाहित होगी। हमारे आभा की रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आत्माएं ऐसे लोगों से मदद पाने के लिए और मिलने के लिए भी आ सकती हैं। इसीलिए कभी कभी आत्मा का जुड़ाव होता है। जब हम तैयार होते हैं तो ब्रह्मांडीय प्राण की प्रचुरता
हमारे माध्यम से प्रवाहित हो सकती है और यह हमारे माध्यम से तब प्रवाहित होगी जब हम नियमित रूप से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर ने बताया कि सभी को अपने ईयरफोन्स का पेंडुलम के रूप में उपयोग करते आना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि चक्र सक्रिय हैं या नहीं। चक्र अपनी ताकत के अनुसार घूमते हैं। कुछ चक्र घूमते हैं लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी मजबूत नहीं होती जिससे वे ईयरफोन के तार को हिला सके। सर ने एक महिला पर पेंडुलम प्रयोग का प्रदर्शन किया। जब पेंडुलम को उस महिला के सहस्त्रा चक्र के ऊपर रखा तो वह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने लगा। फिर सर ने पेंडुलम को उसकी दाहिनी हथेली और बाईं हथेली पर रखा। फिर से वह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने लगा। ज़्यादातर हर चक्र या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस महिला के चक्रों की ऊर्जा कमज़ोर थी, इसीलिए वह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। सर ने यही प्रयोग एक दूसरी महिला पर किया। पेंडुलम उस महिला के सहस्त्रा चक्र तथा उनके हथेली के चक्रों पर भी घड़ी की दिशा में घूमते दिखा। हालांकि हथेली के चक्रों के घुमाव का आकार छोटा हो गया क्योंकि हथेली चक्र एक माइनर चक्र है। अगर हम उंगली के चक्रों की ऊर्जा की जांच करें तो घुमाव और भी छोटा होगा क्योंकि यह एक मिनी चक्र है। जब हम दूसरों की सेवा या मदद जैसे अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे चक्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं। सर ने उस महिला को वापस बुलाया जिसकी चक्र ऊर्जा कमज़ोर थी। उन्होंने अन्य प्रतिभागियों से कहा कि वे वॉन्ड को अपने आज्ञा चक्र पर रखें और कहें, हे परब्रह्म, दिव्य पिता, दिव्य माता, मुझे इस आशीर्वाद का साधन बनाएं। सिंगापुर की सभी महिलाओं को आशीर्वाद देने के लिए आज मेरा उपयोग करें। हीलिंग वॉन्ड सिंगापुर की सभी महिलाओं के मासिक धर्म के दर्द को हील और कंडीशन करें। वॉन्ड को घुमाएं। 1, 2, 3, रोके 1, 2, 3। वे सिंगापुर में मासिक धर्म के दर्द से पीड़ित सभी महिलाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब सर ने पेंडुलम की मदद से महिला के चक्रों को फिर से जांचा, महिला का चक्र अब घड़ी की दिशा में घूम रहा था। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि दिव्य ऊर्जा उसके माध्यम से बह रही थी और फिर वॉन्ड के माध्यम से सिंगापुर में मासिक धर्म के दर्द और रक्तस्राव से पीड़ित सभी महिलाओं को आशीर्वाद दे रही थी। अगर हर कोई दिन में कुछ समय निकाले और एक निश्चित समय पर सभी महिलाओं के पीरियड्स के दर्द को हील करे तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। चाहे वे कोई भी हो तो यह दिव्य ऊर्जा सभी तक जाएगी और उनके पीरियड्स के दर्द को ठीक करेगी। इसी तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे माध्यम से प्रवाहित होगी। वॉन्ड को आज्ञा चक्र के सामने रखकर कहना चाहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर, मुझे इस आशीर्वाद का साधन बनाने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे केवल सिंगापुर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अधिक महिलाओं की मदद करने के लिए मार्गदर्शन करें। मैं दिव्य अग्नि का प्राणी हूँ। मैं वह पवित्रता हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। मेरी आत्मा दिव्य अग्नि की आत्मा है। मेरी आत्मा वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। इस तरह हम ऊर्जा को बदल सकते हैं और लोगों को आशीर्वाद मिलता है। महिला हथेली के चक्र में भी पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा थी। अतः ब्रह्मांडीय प्राण प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर जाने, ध्यान में बैठने या मंत्र जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब केवल वाइब्रेशंस हैं। सर बताते हैं कि वे तिब्बत के मठ में गए थे।
कुछ लोगों को तिब्बत से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वे भारत चले गए, जहां उन्हें रहने के लिए बहुत सारी ज़मीन दी गई। आमतौर पर वहाँ के बच्चे गरीब परिवार से आते हैं और उनसे सभी अनुष्ठान करवाए जाते हैं। भारतीय मठों में लोगों ने अपने लिए एक बड़ा स्थान बना लिया है, जो तिब्बत जैसा दिखता है, और वे भारतीय भाषाएं नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी बोली है। उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है और उन्हें दुनिया भर से बहुत सारा धन मिलता है। बहुत सारे बच्चे वहाँ केवल मंत्रोच्चार करते रहते हैं। भूटान दुनिया का एकमात्र बौद्ध देश है। बौद्ध धर्म वह नहीं है जिसकी भगवान बुद्ध ने प्रार्थना की थी। सभी ने इसे बदल दिया है। पृथ्वी पर स्थित सभी माताओं के लिए आशीर्वाद स्वरूप जो गाना है उसे हम बजा सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सभी निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद देते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। मनुष्य जब आमतौर पर मंदिर जाता है तो वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन पीवीएच में हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमें निस्वार्थ भाव से देश को आशीर्वाद देना चाहिए। उन देशों को आशीर्वाद देना चाहिए जिन्हें भोजन की आवश्यकता है। तब चीज़ें बदलना शुरू होंगी।